Okay, so I think we'll just wait for 5 more minutes. Let everyone else join the class, and then we'll start with today's discussion. Okay, so shall we start with the class? Okay, so I think we can start with the class, and we'll let others join with time as they come. Okay, okay, ma'am. Okay, so basically, for week 3, we had some basic chemical analysis procedures. Then, we had some discussion, like you guys had some discussion about the quality assurance and quality control of the data set, and also how to deal with environmental data set. Then, some basic statistical analysis was also there. And after that, I think the last two lectures were about the introduction and the methodologies of the life cycle assessment. And in that, you guys also had some case studies as well. So we'll quickly have a quick revision of those topics, and then we'll move forward towards the assignment questions, like the previous year assignment questions. I've also taken some case studies, and I've tried to incorporate these life cycle assessment part in a bit detail. So we'll discuss this. The notes will be a bit different from the usual PDFs that you get for the class, because in this I have tried to incorporate the topics in a bit detail. So the life cycle assessment part I'll be covering in a in a somewhat detailed manner, and after that we'll be having the discussion for like those basic 10 questions that we have every year for the assignment part. So let's move ahead. So initially the class started with the chemical analysis procedures. So in laboratories we have two types of procedures. First is direct chemical measurement, and second is use of a sensor of or an instrument. So the direct chemical measurement
It involves basically the titration. For example, we can take a titration of sample for alkalinity or hardness. Like during your test for hardness, we take the sample and add some chemicals into it. For example, we for hardness, with the indicator that we use is EDTA. So it gives the color change. So the indicator gives us the color change, and that is used to detect the concentration of the chemical, or for example, the concentration of the parameter that we are measuring. For example, for hardness, so the color change is from wine red to blue. So that is during the titration process. Next is a direct measurement instruments, like use of a sensor or an instrument. So we have pH meters, chromatographs, and also we have spectrometers also. So these are the instruments that we use in laboratories. And and also we have some same type of sensors that we use for the modeling of monitoring of air quality also. So we have air quality sensors as well. But like for the chemical analysis procedures uh, in many of the processes, some form of sample preparation will be necessary. Basically, we need to prepare some sample in a certain manner, that we need to add some chemicals into it before going for the detection of the compound that we need to know, or to find before finding out the concentration, we need to prepare the samples. So the preparation of the sample, it involves certain processes. For example, it can be physical or chemical preparation. For example, if we are dealing with a waste for which contains if we are dealing with a sample that has some sort of organic waste, so we can go for physical preparation that will involve mixing, drying, or grinding. And before that, will also have like some manual sorting of the waste. So that is your physical preparation. After that, we can go for chemical preparation, and this involves process such as acid digestion, solvent extraction, chemical oxidation. For example, chemical oxidation we do in COD tests. Acid digestion, basically what we do is we need to break all the organic bonds. For example, in the detection of lead and cadmium in the soil sample, we go for acid digestion. And after that, for the analysis, we can either go for titration or some sort of electrodes or any other instrument, laboratory instruments we can use for the analysis part. So basically, for the instrument analysis, uh, different types of instrument have been developed to measure the concentration of the pollutants. And these instruments give a response that correlates the amount of sample present. So for example, the response can be in different forms. So first, it can be in the term of increased conductivity. Then it may be in the form of absorbance of light or the emission of light. So this absorbance of light, basically this we measure in spectrophotometer. It is based on the principle of absorbance of the light. So for example, if you want to measure the concentration of chromium, let us say, in a water sample, so we go for this uh, we prepare the sample, and then we uh, test in spectrophotometer, and at a certain wavelength, the spectrometer tends to absorb the a certain amount of light. So here, for example, we this is some sort of linear calibration curve. This is termed as calibration curve. And if we are dealing with spectrophotometer, then it here will be having absorbance, and here we'll be having concentration. So for different known concentration of pollutants, we'll be having different absorbance levels.
And with that, if we want to check for any unknown sample, for example any sample X, if we want to check its what amount of concentration of pollutant is present in this sample X, so we can directly measure its absorbance. And for example, if we let us say its absorbance comes out to be this much, so what we'll do is we'll just try to find out the X value, and this will be the concentration of the pollutant in this sample X. So this is how this calibration curve works. Now, coming towards the quality control or quality assurance. So basically, the data that we collect in the laboratories, we use them to formulate different types of results. So it is very much important that we ensure that the procedure that we follow is correct, and also the quality of samples that we are preparing is up to the mark, so that the data is reliable. So that is why different types of mechanism of quality control are there. First we can prepare blanks, then we can go for spikes, and then we can have replicates. So like in the previous slide you can clearly observe that uh, these are the samples that I guess these are the samples that are prepared for the test of sulfides. So clearly the bottle that is having no color is the blank, and this is having lower level of sulfide, and this is having higher sulfide. And this samples that we pour them in small cubettes that we have, and this is the place where we open this spectrophotometer, and we just place that cubit inside it and check for the absorbance at a predefined wavelength, and then we make this type of calibration curve. So that is how spectrophotometer works. So generally blanks are pure water samples, and we need to make sure that there is no contamination present, neither in the sample or neither in the water nor in the glassware. And then we have spikes. So basically, in spikes, what we do is we add a known concentration of compound or the known concentration of pollutant to the sample, and we take both the samples. First one is the original one, and next is the spiked one, and then we can compare, perform tests on both the samples. Like for example, this is your original sample, and this is your spiked sample, and this has some X concentration of pollutant, and this is some Y concentration of pollutant. So we have added a certain amount of pollutant in this one now. So this will be Y. For example, let us say if we have added some Z amount of pollutant in original sample to prepare this spiked sample. So this should be, this Y should be equals to X plus Z concentration. In terms of concentration, this Y should come out to be X plus Z. So we can test both the samples and try to compare both the values, like by measuring directly
from the instruments and then comparing them manually to check the efficiency of the test, like how efficient or how correct our test is. Then we can also have replicate. So basically we have a certain sample and we test it multiple number of times. For example, in our environment lab, for any test like for alkalinity or hardness or any other test, we try to have at least three readings, and then we take average of those three readings and then report it to be the actual value that is there. So this is multiple tests for same sample. Now, this I think you guys can read on your own. Now, coming towards this method detection limit. So, what is method detection limit? It is the minimum concentration of a substance that can be measured and reported with 99% confidence that the analyte concentration is greater than zero. And it is determined from analysis of a sample in a given matrix type containing the analyte. So basically, it is the minimum concentration of a substance that can be measured with a um measured either by your experimental observations or by us, and it can be reported with 99% confidence that the value is greater than zero. So we have a formula for the method detection limit, that is MDL is equals to T n minus 1 alpha, where alpha is equals to 0.99. That is, we are reporting a certain value with 99% confidence. Here alpha is showing your confidence interval, 99% confidence interval, and n is the number of samples given. So n minus 1 is your degree of freedom, and s is your standard Hello, ma'am. deviation. Yes. Ma'am, in spikes, you have said that we have to add the known concentration of pollutant in the second sample, right? So, if I am testing it for arsenic or lead, so I need to add lead or arsenic in the second sample. Yes. I didn't get that point. Ki, one sample, right? And second one is we are adding the known amount of pollutant. So pollutant means what? Pollutant is basically whatever parameter that you are trying to measure in your sample. Ah, yes, yes. So that means if I am testing it for arsenic or lead, so I need to add the known amount of lead or arsenic in the second sample, right? Yeah, to prepare a spiked sample, you need to add it. Okay, okay. Thank you, ma'am. Got it. Basically, it is for the evaluation of how accurately your testing procedure is there. मतलब आप कितना properly उसको test कर पा रहे हैं उस sample को, उसको आप measure करने के लिए आप Okay. एक spiked Thank. sample create कर सकते हैं और Okay, values okay, को compare. okay, okay, okay. Okay. Thank you, So ma'am. What is the significance of EPA 92 where in it's the there. previous slide? It was written in brackets EPA 92. Okay, it's basically this method detection limit. The definition that we have taken is it is from an EPA document. So this definition was given by EPA in 1992. Like there was some document, previous document. EPA means what? It is a standard something or what? Yeah, What EPA is is Environmental Protection Agency, like US EPA you have heard of already. So that is EPA. okay? US Okay. EPA, you have heard it. They have their own website. तो वहाँ पर you like you have different definitions or different like
every single topic they have covered. Like for air pollution, they have indoor, ambient, everything. Some standards they've also set. So this definition has been taken from there. It is the source, basically. It is the source of this definition. To be very true, ma'am, this topic of this third week session is very difficult for me because I'm not from chemical or chemistry background. I'm a mechanical Okay, student actually. okay. So I'm not So getting most of the things. But okay, no, ma'am, you can no proceed. issue, sir. Sir, actually, this is if you want, we can skip this. This is just the basic introduction for the. I No, no, think ma'am, those who are please. from chemistry or some environment background, they'll be relating more about to these topic. But I promise you, like after few slides, when we come to this LCA part now, then everything will be much clear. Just try to uh, My understand a purpose is bit. to my purpose is Yeah. to solve the assignment. I have gone through the assignment, but I was not able to understand anything out of it. Okay, okay. I'll try to like clear as much doubts as I can. And Sure, that's ma'am, why sure. Yeah, same I've here. Here I am from civil background, so I didn't understand anything the week 3, and the assignment also I didn't attend actually. okay. So you're from civil. In which branch? May I ask? Like, Civil engineering, BTech civil engineering. acha, okay. You're a BTech student. You have done your Yeah, BTech from civil. yeah. Okay. So I think see अभी तक I don't think कि अभी हमने कोई भी ऐसा टॉपिक उठाया है that is very difficult क्योंकि देखो टाइट्रेशन हम अपना 11th 12th में भी करते थे आई थिंक टाइट्रेशन सबने किया है कि टाइट्रेशन का प्रोसेस क्या होता था Yeah. But ठीक है why we are discussing the sample preparation, testing, and all? ओके Our topic ओके is सी LCA, but I didn't get the connection actually. That's the अच्छा problem. ओके ठीक है सो मैं इम्पोर्टेंस बताती हूँ सी Okay. फॉर परफॉर्मिंग एलसीए वी नीड टू हैव सर्टेन डेटा राइट Yeah, हम अगर क्रैडल टू ग्रेव जा रहे हैं तो डिफरेंट स्टेजेस में हमारे पास कुछ इनपुट डेटा होगा जो हम यूज yeah, करेंगे फॉर दिस एनसीए yeah, तो हम yeah. ये जो सारा कुछ पढ़ रहे हैं दैट दिस सैम्पल प्रिपरेशन और दिस मेथड डिटेक्शन लिमिट और वट एवर क्यू ए क्यू सी ये सब कुछ जो आपकी डेटा की रिलायबिलिटी है ना और या फिर आपके डेटा की ऑथेंटिसिटी है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं ये सब कुछ हम एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं फॉर दैट एलसीए Okay. तो अभी अगर आपको उतना प्रॉपरली नहीं भी क्लियर हो रहा है यू जस्ट नीड टू नो कि ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको हम यूज करके अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं आप कैसे फॉर एग्जांपल इफ यू नीड टू परफॉर्म इन एलसीए तो या तो यू हैव you like you are having ready-made data like you get it from Yeah. some online source Yeah. otherwise you need to create your own data set in laboratories by performing certain experiments तो Oh, ये सेकंड कंडीशन के लिए है व्हेन यू डोंट हैव द रेडीमेड डेटा देन यू कैन लाइक इफ यू वांट टू परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप रख सकते हो किस तरह से आप डेटा सेट को क्रिएट कर सकते हो दिस इज दैट पार्ट ओनली okay. एंड आई थिंक अगर ये इतना बोरिंग हो रहा है then we can skip this part and just quickly get into that LCA part. I think not much is there. I think I just let me see. After this method detection, we have some statistical distributions, and then I think I'll go for LCA only. Yeah, yes. Okay. So statistical distribution, I think I can take because it's very easy to understand for you guys as well. MDL, you just remember this formula, nothing else. मैम वो हेलो मैम Yes. ये जो लॉग नॉर्मल और ये ट्रांसफॉर्म डेटा का जो है ना वो प्लीज न्यूमेरिकल एक बार थोड़ा सा Okay. Okay. So, it was in assignment also. okay. So Marjorie, actually, आज तो I don't think कि मैंने कोई numerical example add किया. Let me check कि नहीं log नहीं इट normal इज का. देयर मैम अच्छा, इन okay. So लेक्चर this MDL ना जो example यस है, यस तो यस ठीक या है. या Okay, या I'll try to explain this ना. I'll try. यस Okay. So this example, right? For example, we start from MDL, method detection limit.
So we have run a certain experiment जिसमें हमारे पास number of samples कितना था 8. तो here n will be equals to 8, right? Yes, correct. For every reading we have certain analysis results, like the concentration is there, that is in milligrams per liter. So for every sample that we run we have certain values, right? तो अभी we have n is equals to 8. Standard deviation, everyone knows how to calculate standard deviation, or shall I calculate? Yes, ma'am, just show once. Okay, okay, fine. See, we have these 8 values. So firstly, we need to calculate the mean value. Mean is x bar. तो x bar क्या होगा? Summation of x divided by n. तो summation, if you guys are having your calculators, or if you are having any notebook, try to do it with me only. आप calculate करके मुझे values बताओ, and then we'll proceed further. Add all these values. Calculate किया किसी ने? How much this is coming? Summation of these. 97.8. Okay, 97.2 97.8. and divided by 8. तो 8 हमारा divided by mean 8. value कितना आ जाएगा? 12.22. ओके, 12.22. तो ये तो आ गया x बार. अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1. तो अभी वी नीड टू, यहाँ पर हम एक कॉलम और क्रिएट कर लेते हैं. This is our xi value. This is xi minus x bar का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? xi माइनस x बार और इस वैल्यू को स्क्वायर करेंगे. क्लियर हो रहा है सबको? जहां पर भी डाउट हो रहा है आप तुरंत पूछिए. तो xi इज 12.11 माइनस x बार इज 12.22 और इसका हम करेंगे स्क्वायर. क्या वैल्यू आ रही है? आप लोग मुझे वैल्यूज बोलते जाइए. If anyone is doing this, or let me just grab my calcium once. How to calculate value of t? Is there a formula? 0.0121. Okay, so we'll do this together. 12.11 minus 12.22.
इसका स्क्वायर करेंगे, वी हैव 0.0121. Yes. नेक्स्ट 12.02 minus 12.22, इसका स्क्वायर 0.04. Just a second, I guess few students are waiting in the lobby. Okay, so I think it's come to be going to be 0.0001. Then 12.06 minus 12.22, the square 0.0256. 12 minus 12.22 square 0.1225. I hope you guys are doing this with me only, because then there's no point. Zero point 0.0169. करेक्ट मी अगर कोई वैल्यू मिस हो रही है मेरे से. 0.01. ठीक है, टैली करी, सबकी वैल्यू सेम आ रही है. Yes, ma'am. किसी को यहाँ तक समझ नहीं आ रहा है, यू गाइस कैन आस्क ओनली. का समेशन कितना आ रहा है, आप मुझे बताओगे समेशन कितना आ रहा है. अगर वैल्यू सेम आ रही है तो समेशन भी सेम आना चाहिए. कितना वैल्यू आ रही है, यू गाइस टेल मी. एनीवन? मेरा आंसर तो आ रहा है 0.2672. आई होप आपका भी यही आ रहा है. Divided by 8 minus 1. N is 8, right? So this comes out to be 0.2672 divided by 7. 1953. 0.1953. तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 0.19. सबका ma'am. आया. Yes. Yes, 0.195. ओके, करेक्ट. ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया टेबल से. This t value, we have a chart for this. This is called students t value. तो वहां पर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 एंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए जब आप वैल्यू चेक करेंगे टी वैल्यू, दैट विल बी 3 ओनली. सो द मेथड डिटेक्शन लिमिट विल बी इक्वल्स टू 0.19 into 3, that is 0.57, right? So for this example हम ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम कंसंट्रेशन, दैट वी कैन से विद 99% कॉन्फिडेंस लेवल, कि हमारे टेस्ट का जो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसको हम 99% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज 0.57 मिलीग्राम्स पर लीटर. इसके नीचे का कंसंट्रेशन जो होगा वो हम
99% कॉन्फिडेंस लेवल से नहीं कह सकते। दैट मीन्स कि इसके नीचे के कंसंट्रेशन में जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ एम्बिगिटी आएगी। सो आइदर वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ सैंपल्स, okay, so now रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन। सो बेसिकली आपने क्लियरली देखा कि इस टेबल में वी हैड 8 नंबर ऑफ सैंपल्स एंड सब में कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस आ रहे थे वैल्यू। सो अगर हमें इस पूरे टेस्ट का रिजल्ट एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं? आइदर हम मीन को बता सकते हैं, मीन वैल्यू को, इस पूरे सैंपल की जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसका हम मीन लेकर के और उस कंसंट्रेशन को हम क्या बता देंगे, दैट इज योर रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन। सो दिस इज नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी में तीन ऑप्शंस होते हैं, आइदर दी मीन वैल्यू जो कि एवरेज होगा, नेक्स्ट इज योर मीडियन दैट इज द मिडल नंबर, देन वी हैव मोड, तो वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा दैट इज योर मोड, और नेक्स्ट वी हैव सम अपर और लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट्स। सो इस तरह से हम अपने सैंपल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, कि जो सैंपल का डेटा है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो फर्स्ट वी हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेक्स्ट अप वी हैव लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल ये कुछ डेटा सेट हमें दिया गया है जिसमें 29 नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। तो जब भी हम इसका कंसंट्रेशन वर्सेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेंसेस प्लॉट बनाएंगे, ये प्लॉट किस तरह से बना है लेट मी टेल यू। हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, और मैक्सिमम वैल्यू वी हैव इज 9, राइट। तो इसको अगर हम एक टेबल के फॉर्मेट में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैंपल, इधर पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, राइट। तो सैंपल विल बी गो फ्रॉम 1 2 3 अप टू 9, और इसके करस्पॉन्डिंग हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कि जैसे जो 1 वैल्यू है वो पूरे सैंपल में कितनी बारी रिपीट हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स इट वी आर हैविंग द रिजल्ट एज 1। तो 1 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, राइट। सिमिलरली फॉर 2, लेट्स सी 2 के लिए कितनी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 3 2 3, 3. सो इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 3, 3. ठीक है। एंड सो ऑन, इसी तरह से हम सबका फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना, मतलब फ्रीक्वेंसी चार्ट बना लेंगे। इसी सेम चार्ट को हमने यहाँ पर प्लॉट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के करस्पॉन्डिंग 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 3। सिमिलरली ऐसे ऐसे जब सारे अप टू 9 हम सारे वैल्यूज को प्लॉट करेंगे तो वी कैन क्लियरली विजुअलाइज दिस कि ये कुछ ग्राफ इस तरह से जा रहे हैं। Here the central value 5 is the middle value जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसको रेप्लिकेट कर रहा है? अभी हमने दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस देखे थे, वन वाज योर नॉर्मल, सेकंड वाज योर लॉग नॉर्मल। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके जैसा दिख रहा है? नॉर्मल। ओके, सो दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अभी हम दूसरा डेटा सेट पकड़ते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव दिस डेटा सेट। सेम चार्ट हम फिर से बनाएंगे, सैंपल फ्रीक्वेंसी, राइट। अभी मिनिमम वैल्यू क्या है,
2, 1, sorry, 1. Minimum Sorry, is ma'am. 1. Okay. And maximum value is 20. 16. 16, 16, 20, 20, No, no, 20, no. 20. Okay, 20. okay. Yeah, it's 20. It's 20. Sorry. So we'll go up till 20. सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे सबके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज और जब उसको प्लॉट करेंगे तो वी कैन सी दैट द ग्राफ इज कमिंग आउट टू बी समवट लाइक दिस ओनली. ये कुछ स्क्यूड है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो सिमेट्रिकल. ये स्क्यूड ग्राफ है, कुछ एसिमेट्रिकल सा लग रहा है. तो दिस इज योर लॉग नॉर्मल. राइट, यहां तक क्लियर है. In log normal distribution, your mean is more than median and mode. Normal distribution में mean value क्या थी? कम थी. Is less than. Right. Now, same data set, I guess. एक और data set हमारे पास जिसके लिए जो फर्स्ट डेटा सेट था उसका मीन था 4.83. स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 2. स्टैंडर्ड डेविएशन अब आप सबको आगे आई होप कैलकुलेट करना. वेरिएंस वाज 4. And the data was normally distributed. Next up, second data set के लिए जो mean था, just a second. Okay, second set हमने देख लिया data was not normally distributed. तो अभी जो जैसे second data set था, the data was not not normally distributed, it was log normal. तो अभी उस डेटा को हम कैसे हैंडल करेंगे जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या डेटा सेट जो है वो लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. जनरली जो एनवायरमेंटल डेटा सेट है दैट वी हैव इट इज लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी हमारे पास डेटा सेट है उस पे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. सारी वैल्यूज में लॉग ले लेंगे हम. राइट, और उसके बाद फिर उसका मीन कैलकुलेट करेंगे, देन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस. तो जब मीन जो है हाँ वो हेलो मैम. ट्रांसफॉर्म डेटा सेट का. हाँ मुझे या यही पूछना था मैडम. हाँ या मुझे या ये अबाउट ट्रांसफॉर्म डेटा ही पूछना था कि अरिथमेटिक मीन जो हमने निकाला है 1.46, सो हाँ इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल लॉग वैल्यूज, राइट? या राइट. Okay, so we need to take the log value of each data set. हाँ, सारे डेटा सेट का हम लॉग वैल्यू लेंगे और फिर उसका मीन हाँ वैल्यू निकालेंगे. मीन निकालेंगे. ओके ओके. और जब भी जो ट्रांसफॉर्म डेटा सेट का मीन है अगर उसको हम वापस से ट्रांसफॉर्म करें, वापस से ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि e रेज टू द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड मीन. दैट इज ये जो अरिथमेटिक मीन आया था ट्रांसफॉर्म डेटा सेट को, जब उसका e रेज टू द पावर हम लेते हैं तो दैट वी गेट द हम्म. ओरिजिनल मीन.
और इसी को Okay, 4.28. या और इसी को हम ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं. ओके, सो जनरली जो एनवायरमेंटल डेटा सेट्स हैं वो आइदर नॉर्मल या फिर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करते हैं. इन केस ऐसा नहीं है, then we need to go for more advanced statistical methods, or we need to find out another distribution methods, but it's of no use. अभी हम फिलहाल LCA पर फोकस करेंगे. So questions अभी discuss, like first I'll go to LCA part ना. Okay. So, see, these are slides that I've taken for your understanding point of view only. So, sir has discussed in the class that typical product life cycle, right? तो एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में कितने फेजेस होते हैं? फर्स्टली वी स्टार्ट विद द रॉ मटेरियल्स. हमारे पास रॉ मटेरियल्स आएंगे, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी और का इनपुट होगा इन रॉ मटेरियल्स को गैदर करने के लिए. फिर हम जाएंगे प्रोडक्शन पार्ट में. प्रोडक्शन के बाद जब एक बार ये मटेरियल फॉर्म हो गया, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, एंड देन विल गो टुवर्ड्स द इट्स यूज, एंड यूज के बाद हम डिस्पोजल या फिर रिसाइकल के लिए जाएंगे. हर स्टेज में एनर्जी का यूज हो रहा है, और हर स्टेज में सम अमाउंट ऑफ वेस्ट इज बीइंग जनरेटेड. इनपुट इज योर एनर्जी, या फिर कुछ स्टेजेस में एनर्जी के साथ साथ मटेरियल्स भी होंगे, और आउटपुट इज योर आइदर वेस्ट. ये तो वी गेट दिस एज को प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट्स, बट मेन तो आउटपुट ये हमें मिल रहा है ना. और every single stage we have some emissions. So this is a typical product life cycle. तो जनरली इंडस्ट्री में क्या हो रहा है अभी, वी कैन सी क्लियरली दैट ग्रीन इज अ न्यू ट्रेंड. Every industry is trying to incorporate methods that are sustainable, or that are more environmental friendly, and this is also being used as a marketing strategy. You can clearly see in many products they claim to be eco-friendly or environmentally friendly or organic, and every and blah 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 and all that. So this is being a new trend. तो अभी क्या है कि not just for the sustainable point of view, this is more sort of a business or economical point of view is also there for this life cycle assessment or this green concept. So government is also looking for policies to promote greener approaches towards production of energy, power, and other products. And like, how can you tell if something really is green? Okay, so there's a debate going on e-vehicles. So can anyone tell me that if they are actually green or not? Anyone? I just want a healthy discussion. मतलब like you Ma'am, just ma'am, though while running they are a bit during the co during the course of running they might be termed as greener, but while the production of because battery is the main content of that vehicle, while producing the battery, a lot of pollution, a lot of chemicals and other things are being generated and utilized. So in a true right, sense, that cannot be termed as green. correct. And even I would just like to add a point to your answer, that even in the course of their running, so basically we need to understand this कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को ग्रीन टर्म कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से ग्रीन होना चाहिए, whether we are using it or not. हम ई व्हीकल को रन करने के लिए किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का, राइट? एंड
ना अभी हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? थर्मल पावर Thermal, प्लांट्स, thermal power plant, yes. एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एमिशंस. तो Yes. जब हमारा मेन सोर्स जो है, जो उस पावर को हमें दे रहा है, वो एनर्जी का सोर्स ही ग्रीन नहीं है, तो दिस प्रोडक्ट कान बी एंटायरली ग्रीन. करेक्ट? या पार्शियली अगर हम बोले कि हाँ ठीक है, इस प्रोडक्ट में खुद के कोई एमिशंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, राइट? ये एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट जिस चीज के ऊपर ये रन कर रहा है, द एनर्जी दैट इट्स यूजिंग, दैट इज ऑल्सो नॉट ग्रीन. It is more maintenance free approach, but in terms of green product, it cannot be termed as a green product. Right. So that is why we need to have a like overall idea about from like cradle to grave that we say in LCA ना. तो हमें पूरा आइडिया किसी भी प्रोडक्ट को देखने के लिए हमें उसका फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग टू इट्स डिस्पोजल, हमें सारे पर्सपेक्टिव्स को लेना चाहिए. Then only we can say that if something is really green, right? So basically, coming towards LCA, so life cycle assessment. What is life cycle assessment? It is compilation and evaluation of the inputs, outputs, and the potential environmental impacts of a product system throughout its life cycle, right? में starting से life cycle assessment LCA के different stages we have. Raw material extraction, then we have manufacturing assembly, then transportation and distribution, then use, then its disposal. So basically, the goal of LCA is to compare the full range of environmental effects that are assignable to products and services by quantifying all the inputs and outputs. Quantifying. We need to have a certain quantity. Quantify हम कैसे कर सकते हैं? एनर्जी के टर्म्स में या मटेरियल्स के टर्म्स में. अगर एनर्जी है तो कितने किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी ले रहा है, और मटेरियल है तो कितना मटेरियल हो रहा है, एमिशंस क्रिएट हो रहे हैं, तो एमिशंस को हम क्वांटिफाई करेंगे कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एमिट कर रहा है या कितना कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन पॉल्यूटेंट एमिट कर रहा है. So we need to quantify all the inputs and outputs of the material flows, and then we assess how these material flows affect the environment. And this information is used to improve the processes, support policies, and provide a sound basis for informed decisions. Right? So this ISO 14040 2006, this is Indian standard. Sorry, this is International Organization for Standardization, ISO. So this describes the principles and frameworks for LCA that include definition of the goal and scope of the LCA, then life cycle inventory analysis phase, then we have life cycle, uh, excuse me, just a second. Okay, so then we have life cycle impact assessment phase, the life cycle interpretation phase, and then reporting and the critical review of the LCA. Then we have limitations, the relationship between the LCA phases, and so on. So LCA ki history. So basically, the first one of the first publications that were emerged in 1963 by Harold Smith at the World Energy Conference. LCA की first publications आई थी 1963 में. It is not a very old concept. It is certainly a newer concept. Then first study credited to Coca-Cola in 1969, where they performed LCA on cans or glass bottles. And then with time, different studies were performed, and the most commonly used LCA metrics are these one. लाइक अगर हम आउटपुट्स को देख रहे हैं, कि इम्पैक्ट, अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की हम बात करें तो हम किस किस टर्म्स में देख सकते हैं एलसीए मैट्रिक्स. इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डिमांड, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स, ओजोन डिप्लेशन, वाटर फुटप्रिंट, eco and human toxicity assessment, and land use. These are the most commonly used LCA matrices.
Now, coming towards the scope of LCA and application. So, the scope of LCA is promote the understanding of product manufacture and delivery systems, highlight the value chain efficiency opportunities, then ensure that changes do not shift the burden. So much disturbance going on. Okay, so I guess this theory part you guys can read on your own. I have attached all the data that I could gather. Is it fine if I just skip this and just come directly to the some case studies? But are we getting these Yeah. slides? Yeah, definitely. I'll upload every single page. I'll upload this whole document only. You guys can read it because see, there's some disturbance going on in the background. So I hope it is fine if I just go towards the. Okay, I think, but यहाँ पर तो explain करना पड़ेगा phase wise. Case study कहाँ पर है? Okay, so can we move towards the case study? Is it fine? Or you guys want me to discuss these topics as well? It seems that these are important things to learn actually. Yeah, So I agree. अच्छा okay, if you guys make confirm कि background में जो noise आ रही है उससे आप लोगों को कोई disturbance हो रहा है? no, ma'am, no, it's clear to us. As far as Okay, I am fine. concerned, it is clear. Okay, fine. So I'll just continue with the discussion. God, because I need to record this lecture and I need to upload this as well. So I can't afford to have this first time for sounds. Okay. Okay. So we were discussing the scope of LCA and things that are beyond the scope of LCA. So first is the things that come in the scope of LCA is it promotes the understanding of the product, manufacture and delivery systems, right? Then it also highlights the value chain efficiency opportunities, like पूरी के पूरे वैल्यू चेन में जहां जहां पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वी कैन have an idea with the LCA process. Then ensure that changes do not shift the burden but improve overall system. Then it can also highlight the trade-offs. Then it can compare two systems that deliver the same service. Basically, this is the most common thing that we do LCA for. We generally compare two products or systems that are delivering the same service, and we can go for LCO of those two products or systems. And clearly, if for example, I have manufactured some product X, and there is some product Y that is already there in the market. So what I can do is I can go for LCA of both the products, and if my product comes out to be a better option, then I can use it to marketize in the marketing of my product that my product is more environmental friendly, or my product is better than that product due to the certain factors. So it can be used in the comparison part. Then for the benchmark progress, then it can provide impact of the or the footprint of certain activity, product or service, and it can also be helped to support environmental claims. Okay, so things that are beyond the scope of LCA, like LCA में क्या चीजें नहीं हो सकती हैं? It cannot measure the product performance. It does not address the compliance with environmental laws. It does not include bricks and mortar of capital equipment. It does not include analysis on support personal needs. Does not normally measure building space conditioning. Does not include the minor inputs because हम यहाँ पर major parts को ही consider करते हैं. It does not provide information about employee direct impacts. It is not a risk assessment analysis,
and it does not define the specific course of action to take. So types of LCA, we have two types of LCA, but I guess it was not discussed in the class, so I'll just skip this part. So these are the phases of the LCA. First is your goal and scope definition, then we have inventory analysis, and then we have impact assessment. And in every stage, we have interpretation. And generally, these phases are often interdependent. So first is in first phase in the goal and scope. The goal statement is the first component of an LCA and it guides much of the subsequent analysis. So basically goal में हम बताते हैं कि हम LCA करना क्यों चाहते हैं, that why do we need to perform the LCA, what is the main purpose. So the goal must state its intended use, the reasons or purpose for the study, the target audience for which we are going to perform LCA, whether comparative and disclosed to the public. Okay, now for the scope. So the scope provides the background information, details, What, methodological. what is Yes. the relevance of the term audience? Audience basically हमारे target audience क्या है? For example, अगर हम किसी सर्विस का LCA कर रहे हैं, for example, किसी प्रोडक्ट का LCA कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टारगेट ऑडियंस होगी उसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर मेकिंग सम pencil or like for example considering the LCA of a pencil, so उसका टारगेट कहाँ पर जाएगा, हमारा स्टूडेंट्स और दी टारगेट ऑडियंस मेजर पार्ट क्या होगा, वो स्टूडेंट्स होगा. So we need to have some information about the target audience as well. It is more relevant when where we are doing the LCA for some sort of services. Then we have scope. Scope में क्या है, product system, functions of the system based on the demand, the functional units, system boundary conditions, then allocation procedures, then impact categories or assessment methods. These are the different methods, the assumptions and limitations. Okay, so scope को define करने के लिए these are different types that we do LCA. First is cradle to grave, जिसमें कि हम सारे फ्लोज और इम्पैक्ट्स को रॉ मटेरियल से लेके डिस्पोजल एंड रीयूज तक सारा कुछ स्टडी करते हैं. दैट इज कॉल्ड क्रेडल टू ग्रेव. नेक्स्ट इज क्रेडल टू गेट. इसमें इट इंक्लूड्स ऑल द फ्लोज एंड इम्पैक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन बट एक्सक्लूड्स द प्रोडक्ट यूज एंड एंड ऑफ लाइफ. ये रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन तक ही बढ़ते हैं. दैट इज कॉल्ड क्रेडल टू गेट. देन गेट टू ग्रेव. गेट टू ग्रेव में क्या होगा, includes the process from the use and end of life phases. Post production के बाद जो भी चीजें होंगी, that is called gate to grave, right? It determines the environmental impacts of a product once it leaves the factory. And then we have gate to gate, that it only includes the flows from the production or material processing steps of a product life. Then we have functional units. So this is the quantified performance of a product system or for use as a reference unit. So it should be clearly defined during our LCA. In order to compare two products, their functional units must be equivalent. So comparison अगर हम किसी भी दो products का करेंगे तो functional unit should be same. Then coming towards the allocation. So in many processes, more than one product is produced. That is joint production. And in such cases, it is necessary to divide the environmental impacts from the process between the products. So allocation क्या है? Allocation is the partitioning and relating of inputs and outputs of a process to the relevant products and byproducts. Then the second phase is inventory analysis. So it involves the compilation and quantification of the inputs and outputs for a given product system.
Next up, we have impact assessment. Impact assessment may it identifies the and evaluates the amount and significance of the potential environmental impacts that are arising from the life cycle impact assessment. तो उसके लिए पहले हमें इनपुट्स और आउटपुट्स का आइडिया होना चाहिए, देन ओनली वी कैन डिफाइन व्हाट आर द impacts of different activities. Um, please do one thing. I'll share this PDF with you guys, and just try to read it once, and we'll have a detailed discussion if you guys want again, because this all these phases will be more clear when we go for the case studies, right? So I think I'll go just for the case study because uh, I'm unable to focus because of this noise constantly coming in the background, and I can't do anything for that. Right, so I'll just take this case study once. अगर इसके बाद भी आपको कोई steps clear नहीं होते हैं, then we'll get back to the theory part, right? So this is a case study जिसमें हमने hand dryers होते हैं, आपने देखे हैं, Excel dryer has developed and is marketing a hot air hand dryer that is an industry leader in per use energy efficiency. While a comparison to other hot air hand dryers in use phase energy efficiency is straightforward. It is not clear how this product compares with conventional hand dryers in other stages of the life cycle and for a complete set of environmental performance metrics. In addition, there is a need to understand the relative environmental impacts of these electric hand dryer systems with other alternatives in fulfilling the same function, most notably paper towels. तो यहाँ पर हम कंपेयर गोल एंड स्कोप हमने डिफाइन किया सबसे पहले कि हमें कंपेयर क्या करना है. एक हैंड ड्रायर है हॉट जिसमें फर्स्ट इज योर हॉट एयर हैंड ड्रायर, उसको कंपेयर करना है. दूसरा क्या है, इन यूज फेज एनर्जी एफिशिएंसी, तो उसको हम कंपेयर करेंगे कन्वेंशनल हैंड ड्रायर से और उसके लाइफ साइकिल स्टेजेस को कंपेयर करेंगे. और इसके साथ हम थर्ड ऑप्शन क्या लेंगे, पेपर टाल्स का. तीनों का पर्पस सेम है कि हमको सिर्फ वी नीड टू ड्राई आवर हैंड्स. सो गोल और स्कोप हमने डिफाइन किया. देन फर्स्ट वन इज योर फंक्शनल यूनिट. फंक्शनल यूनिट क्या है, अब सिंस दीज टू आर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, तो डेफिनेटली जितने एंड दिस इज योर लाइक पेपर टाल इज यूज इन थ्रो थिंग. हम इस एक पेपर टाल से एक टाइम पे एक पर्सन ही अपने हैंड को ड्राई कर सकता है. तो अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो वी नीड टू हैव अ सर्टेन फंक्शनल यूनिट जहां पर हम सेम ग्राउंड पर ही कंपेयर कर सकते हैं. सो दैट ग्राउंड वी हैव टेकन इज 2,60,000 पेयर ऑफ हैंड्स. This is your functional unit. Drawing 2,60,000 pairs of hands. This is example of an study. आप normal study के लिए 300-400 hands ले सकते हो, 20-30 hands भी ले सकते हो, और सारी values को उसके according हम compare करेंगे. तो function क्या था? The purpose of the products in question is to dry hands after washing in a public restroom. और क्यों हमने इस 2,06,000 फंक्शनल यूनिट को हमने 2,60,000 ही क्यों रखा है? क्योंकि अगर हम अज्यूम करें कि एक हॉट एयर हैंड ड्रायर की एवरेज लाइफ साइकिल है 10 years और 500 टाइम्स इट गेट्स यूज पर वीक, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने फॉर 10 years के लिए इसका नंबर ऑफ हैंड्स निकाला है. तो अब दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स टू बी कंपेयर्ड कि क्या क्या यूनिट्स हैं जो जो इसमें हम कंपेयर करेंगे. तो फंक्शनल यूनिट तो हमारी हमने डिफाइन कर दी 2,60,000 पेयर्स ऑफ हैंड. तो
प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी? 1 ड्रायर एंड 1381 of electricity. For conventional hand dryer, we have 1 dryer and 5108 kilowatt hour of electricity. पेपर टाल्स के लिए नॉर्मली एक डिस्पेंसर की जरूरत है और 37,960 मीटर स्क्वायर ऑफ द पेपर टाल दैट इज नीडेड. यही सारा डेटा है दैट आई वाज टेलिंग कि इस डेटा को आइदर हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं या फिर हमें खुद को क्रिएट करना पड़ेगा इस डेटा को. देन हाउसिंग कंपोनेंट्स. अब इस ये किन किन चीजों से मिलके बना होता है? इसके हाउसिंग कंपोनेंट्स क्या हैं? जिंक, स्टेनलेस स्टील और रेनफोर्स्ड रेजिन. कन्वेंशनल ड्रायर जो बनता है जिंक और एल्यूमिनियम से बनता है. और पेपर टाल के लिए हाउसिंग कंपोनेंट्स क्या है? पॉलीप्रोपाइलीन. इंटरनल कंपोनेंट्स में क्या है? मोटर, फैन, ऑप्टिकल सेंसर, वायरिंग. सेम फॉर कन्वेंशनल. और पेपर टाल्स अगर हम जो ऑटो डिस्पेंस होने वाला पेपर टाल मशीन है तो उसमें मोटर लगा होगा, एक ऑप्टिकल सेंसर होगा और बैटरीज होंगी. मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन सबकी डिफाइन कर रखी है. डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से शिप होता है? इट इज शिप्ड एज अ सिंगल यूनिट और ऑन पैलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर. सेम है तीनों के लिए. सप्लाई चेन डिस्टेंसेस. डिस्टेंस क्यों नेसेसरी है? क्योंकि हम ट्रैवलिंग भी कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग द एलसीए कि ट्रैवल करने में क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट के अलावा क्या एनर्जी इनपुट्स आ रहे हैं. फिर पैकेजिंग मटेरियल, रिसाइकलिंग रेट एंड यूज फेज अजम्पशंस, ये सारी डिटेल्स आ गई. अब इसको हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज योर मटेरियल प्रोडक्शन. तीनों के लिए मटेरियल प्रोडक्शन को कंपेयर किया हमने. फिर ट्रांसपोर्टेशन सेम था, ट्रक से डिलीवर हो रहा है 7 किलोमीटर्स के लिए. देन वी कम टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग फेज. जिस जिस चीज का यूज हो रहा है. देन अगेन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये वो रिटेल सेंटर्स में जाएगा. फिर इसका यूज होगा. यूज होने के बाद में जो भी वेस्ट क्रिएट हो रहा है वो फिर से ट्रांसपोर्ट होकर के एंड ऑफ लाइफ में जाएगा. आइदर इट विल गो फॉर लैंड फिलिंग या फिर वेस्ट टू एनर्जी या फिर रिसाइकलिंग के लिए. तो ये रेफरेंस फ्लोज हमने क्रिएट किए. अब इसके करस्पॉन्डिंग ये लाइफ साइकिल इन्वेंटरी डेटा हम क्रिएट करते हैं. तो फर्स्टली हम यहाँ पर फंक्शन यूनिट्स को डिफाइन करेंगे सारी. फिर तीनों टाइप्स ऑफ ड्रायर्स जिसको जिसको हम ले रहे हैं, एक्सलरेटर, कन्वेंशनल एंड पेपर टाल्स, तीनों के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज आ रही है इन्वेंटरी डेटा की उसको हम टेबल के फॉर्मेट में ऐड ऑन करेंगे. और उसके बाद हम इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए जाते हैं. सो वी हैव क्लाइमेट चेंज स्कोर, वाटर यूज, ह्यूमन हेल्थ, इकोसिस्टम क्वालिटी एंड रिसोर्स डिप्लीशन. और ये सारे प्राइमरी इम्पैक्ट कैटेगरीज हैं. और ये सारे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं. इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए आपके पास या तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर साइमा प्रो सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें आप इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं. These are the graphs that are generated from softwares. और उसके बाद जो भी ग्राफ्स आ रहे हैं उसको इंटरप्रेट करने के लिए हमने देखा कि एक्सेलरेटर shows a significant advantage in its environmental impacts in comparison to the conventional electric hand dryers or to paper towels. For electric hand dryers, majority of the environmental impact occurs during the use phase. For paper towel, impact is dominated by the production of raw materials and manufacture of the towels. Transportation is of moderate importance for the towel systems, while of very little importance for the electric hand dryers. And sensitivity and uncertainty tests that have been conducted indicate that the environmental advantage of the accelerator has very little dependence on the assumptions of the study or conditions of use.
the use of renewable energy or significant improvements in energy efficiency would significantly improve the performance of paper towel systems, but would not achieve a reduction to the level of the accelerator. तो इस तरह से हम जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे उनको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं. फॉर दिस इज अ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स स्टडी. आप सिंपल स्टडी देखने के लिए जो क्लास नोट्स में दैट वाज ऑफ नॉर्मल वुडन पेंसिल पेंसिल एंड मैकेनिकल पेंसिल का कंपैरिजन था, आप उसको भी देख सकते हैं. नाउ विल गो टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. Starting. Okay. So the method detection limit can be determined by which of the following operation? What is the formula? What was the formula for a method detection limit? Anyone? Are you guys there or just left the meeting? Anyway, so it will be uh it's not B, it will be A. Remember, the confidence interval was 99%. N minus 1 was degree of freedom and S was standard deviation. So it will be equals to MDL is student's T value, T for N minus 1 degree of freedom and 99% confidence interval multiplied by the standard deviation, right? Okay. Next, in which of the following cases you can say that the obtained data set is probably normally distributed? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मीन वैल्यू थी वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस से वाज इट मोर, वाज इट लेस और वाज इट इक्वल्स टू? अगर डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. Or less. It will be more than the standard deviation and variance for normal distribution. Less आएगा तो it will be not, it would not be normal distribution. तो आप इसको याद भी रख सकते हो कि अगर आपकी मीन वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस से ज्यादा आ रही है तो आपका डेटा सेट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. To make this method detection limit confident, how many number of samples should be taken according to the EPA recommendation? Greater than 10, greater than 5, greater than 7. Okay, I'll tell you guys. It should be greater than 7. More than 7 samples should be taken to make the MDL confident. And this recommendation was given by EPA. Next question is, out of the following sample preparation process, for any analysis which are categorized as chemical preparation techniques. Chemical preparation techniques, इसमें से कौन कौन सी हैं? Solvent extraction and chemical oxidation. Right. Which of the following chemicals are used in toxicity characteristic leaching procedure (TCLP test)? Nitric acid, acetic acid, hydrochloric acid, sodium hydroxide, and calcium hydroxide. For TCLP test, we use acetic acid and sodium hydroxide. These two are used for the TCLP test. Then the next question is, which of the following statements are true? First is, large number of sample analyses are generally a good representative of the actual one.
Next is small number of sample analysis are generally a good representative of the actual one. Then for heterogeneous sample, the required numbers of sample analysis is greater than homogeneous sample. And for homogeneous sample, the required number of sample analysis is greater than the heterogeneous sample. So compare these two statements and these two statements and tell me which one is true. Large number of sample analysis are generally good. Right. Because the more the number of samples we take, na, so the better is the representation of the actual sample. And for the next one, for heterogeneous sample, किसमें ज्यादा number of Ha- samples की जरूरत het- होगी? Heterogeneous sample. राइट, क्योंकि अगर होमोजेनियस सैंपल है तो हम उसमें अगर नंबर ऑफ सैंपल्स कम भी रखते हैं तो भी हमें पैरामीटर की वैल्यू सेम ही मिलेगी ऑलमोस्ट. बट हेट्रोजेनियस सैंपल की कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सिग्निफिकेंटली वेरी कर जाती हैं वैल्यूज. सो वी नीड टू हैव more number of samples, right? Next, what are the purpose of conducting life cycle assessment? It helps in making choices which have less impact on environment. It helps in making choices which provide more economic advantages. It helps in making choices which are good for society. And then it helps people and industrialists understand how they can make a difference by adopting more environment friendly products or processes. Uh, Let me tell you, it has more than one correct answers. A and D. A, right, and D. It is also right. Correct. Okay. So, which elements are responsible for global warming? Global warming, all of you must have heard. CO2, CO2. CO2, CH4, We can also. And what about NO2? NO2, That's nitrous NO2. oxide. Yes. All three are responsible for global warming, Yes, right? yes. Then, use of a spectrophotometer in the analysis of a colored sample will not create any problem. Is it true or false? Okay, I guess spectrophotometer, बहुत सारे लोगों ने must have not performed this experiment also. So I'll just tell you कि spectrophotometer will work best for colorless samples क्योंकि वो पूरा का पूरा color development technique के ऊपर ही based होता है. तो इसमें क्या हम करते हैं that we artificially add some chemicals to generate a specific color और based on the absorbance of that color हम concentration find out करते हैं. तो अगर किसी सैंपल में ऑलरेडी कोई कलर प्रेजेंट है तो क्या होगा जब हम आर्टिफिशियली कलर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो मिसमैच होगा. तो दैट इज व्हाई इट वर्क्स बेस्ट विद कलरलेस सैंपल. फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर सैंपल कंसीडर कर रहे हैं तो ये वेस्ट वाटर सैंपल के साथ उतना बेटर काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ कलर प्रेजेंट होता है. So it will create problem with the sample that is having any sort of color. So this statement will be False. false. Clear? Oh. Okay, so this question you took like is from the class notes only. While comparing the wooden pencil versus a mechanical pencil on the basis of the life cycle assessment, both the pair of writing and 20 pages of writing and writing and 1 hour of writing can be chosen as a function and functional units.
एक फंक्शन है और एक फंक्शनल यूनिट है. The function is writing, which is same in both the Mm, cases. mm. And functional unit is different. First is 20 pages of writing and next is 1 hour of writing. So can we take both as the functional units? Like any one of the both, Yes. मतलब किसी एक को भी हम ले सकते हैं क्या functional unit? Is it true or false? Just try and think कि functional unit should be same for both the products. So is it fine to take 20 pages of writing or 1 hour of writing as a functional unit? Okay, I'll tell you guys. Yeah, we can take these as the functional units. We just need to have certain assumptions. Like for example, अगर हम 20 pages of writing को functional unit declare कर रहे हैं, तो we need to clearly state that कि जो handwriting है that should be same with both the pencils. Spacing should be same with both the pencils. The content that we're writing should be same. Then only we can compare, right? सेम इज फिर फॉर 1 hour ऑफ राइटिंग. अगर 1 hour ऑफ राइटिंग हम दे रहे हैं, द राइटर शुड बी द सेम पर्सन हु इज राइटिंग दैट. द कंटेंट शुड बी द सेम. So with giving certain assumptions, we can clearly take both the things as the functional units. So I hope that is clear for today's class. And if you guys are having any doubts or anything, just let me know. Okay, so shall I end this class? I hope I The was able to question, clear a few in doubts. the Yes, question sir. given in the question given in the third assignment, will you be able to solve these with the tutorials you have taken in the class? I hope you will be able to solve them. Like, what is the deadline for your third assignment? It's over, no? Okay, it's over. So, try to solve them by the notes that I provided in today's class. In case you are not able to solve any question, we are having a class on this Tuesday only. Or you can just tech, send me a message in the chat box only. I'll try to discuss or I'll try to give solution for that question. Okay, ma'am. Thank you. Okay. And if in any case you're not able to solve any question now, we'll take that in the next class. We are having a class on this Tuesday only. You just give me that question. It's better if you ask that question prior to the class, because I'll take that. I'll add that question into my PDF only. So I hope that is fine. If you are unable to solve any question, just send it in the chat box only. Sure, ma'am. Yeah. Next Tuesday will be the week 4 topics, no? Yeah, yeah. Next Tuesday we'll be having week 4. This week this class was delayed since it was like 15th of August. So that's Yeah. why I postponed that class. Otherwise, we'll be having the week 4 class on this Tuesday, and then it will be like every Tuesday we'll be having the class. Okay. Okay, so
I hope it's fine with all of you. So I'll just end the class for now. Okay, okay, ma'am. Thank you. Okay, thank you so Thank you so much. much. Okay, see you all.